This is Global Gurukulam Academy, inviting the students of Standard 4 and 5 together, sort of a combined class, starting with chapter number 1, dealing with the part of the planet Earth called the Northern Mountains. So Global Gurukulam Academy wishes you a very good morning. We can also wish you have a very good time because we are nearly with the level of time and space. समय कभी खत्म नहीं होते हैं, space जगह जो असमाप्त कभी खत्म नहीं होते हैं. So it is better to have a good time and live in the level of the time. So standard 4 and 5, let us have the combined class dealing with the planet Earth, the one part of the land, one part of the planet Earth that is called the Northern Mountains. The Northern Mountains for standard 4 and 5. The Northern Mountains is a part of the land, is a part of the solid structure of the planet Earth. It has nothing to do with water, it has nothing to do with air. मगर आप, if you see the magic, उस solid structure मतलब पहाड़, Northern Mountain, वहीं से पानी आ जा रहे हैं, वहीं से हवा भी आ रहे हैं. So what a mixture, what a chemistry when we deal with a solid. Though it is solid, it has the liquid and it has the air which has a beautiful temperature of its own. हालांकि सूरज है, we have the solar system, the energy of the solar, the sun, yet it has a peculiar way of moderating the temperature. So this is the power of solid, clean, white, solid. That is called the mountains. So let us come to the first chapter, the Northern Mountains. Northern Mountains of which country? The Northern Mountains of the country called India. Now India is located where? India is located in the southern part of Asia. Asia is a huge country, is a huge piece of land, जिसे हम continent कहते हैं. Asia is a huge piece of land, and towards the end, southern part of Asia, east, west, north, south. Right hand is always east. Right hand side is always east. East, west, north, south. In the southern part of Asia, we have a country called India, and in the northern part of India is the mountain. So south of Asia is India, and north of India is the mountain. And from the mountain, when you go to the more south, that is India, the last south, we have the water. So starting with a huge land, ending with water. और वाटर में जाने से पहले सड़क में जो बम्पर होते हैं, जो गाड़ी को सिग्नल देते हैं कि धीरे चलिए, तो उस तरीके से एक पहाड़ आ गया है बीच में, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन. नॉर्दर्न माउंटेन की इस तरफ जब हम आ जाएंगे, थोड़ा धीरे चलिए, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ द लैंड विच इज कॉल्ड एंशियंट सिविलाइजेशन. सो पूरा कॉन्टिनेंट एशिया में सिविलाइजेशन पुराना नहीं हुआ, मगर वहां का धरती बहुत पुराना है. और जब हम समुद्र के पानी के पास आ जाते हैं या हवा के पास आ जाते हैं, एक बम्पर आ जाता है बीच में, जिसको यहाँ पे माउंटेन बताया जा रहा है. उसके बाद बम्पर के बाद अगर जो समझदार इंसान होगा, उसके लिए ये मैसेज जाता है कि बी स्लो, बिकॉज इट्स एन एंशिएंट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन. इंसान बहुत यहाँ इस जगह के इंसान बहुत पुराने हैं, तो इनके साथ स्लो, विनम्रता, आई मीन सॉर्ट ऑफ ए एलिगेंस रखना बहुत जरूरी है. इट्स अ विजडम. यहाँ पर हार नहीं होती है, यहाँ पे हार की भी जीत होती है. सो स्टोरी व्हेन वी कम टू सोशल साइंस, कहाँ पे आकर धरती हवा से मिलेगा, कहाँ पे आकर धरती पानी से मिलेगा, कहाँ पे धरती आकर आइडियाज ऑफ सिविलाइजेशन के साथ अचानक घुल मिल जाएगा. इट्स अ शाइन और द प्रेजेंस ऑफ अ सॉर्ट ऑफ ए सुपर ह्यूमन्स प्रेजेंस. So starting with the northern mountain. Once more, the northern mountain is in the continent of Asia. Asia is a huge continent. तो एशिया के जब हम साउथ में आ जाएंगे, राइट इज ऑलवेज ईस्ट, राइट हैंड हमेशा ईस्ट होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो व्हेन वी कम टू द साउथ पार्ट ऑफ एशिया, वी हैव अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, और उसके नीचे इज वाटर, दैट इज द ओशियंस, मगर बीच में एक बम्पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन. तो ये पहाड़ जब आ जाते हैं, उसके बाद का मैसेज है not for the land but for the people, कि यहाँ के people are very humble, civilization is very old, so proceed peacefully. क्योंकि यहाँ पर अगर आप पीसफुली नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़े में रहेंगे, तो आगे चलकर आपको पानी ही दिखेगा, जिसकी भयंकर तूफान या जिसका भयंकर प्रेजेंस इन द नेम ऑफ सुनामी या जो भी है, वो हमारे मतलब हमारे डिस्टर्ब स्टेट से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं. सो वी शुड बी वेरी पीसफुल. So this is a beautiful wisdom, a beautiful knowledge coming from the extreme part of the universe
उन प्राणी के लिए जो दिमाग से और सोच से और अच्छे भावनाओं से प्रभावित हमेशा होते रहते हैं. So let's come to the northern mountain. India is the 7th largest country in the world in the shape of land. India is the 7th largest and it is near the oceans and it has the northern mountain in the northern part of India. Asia के साउथ में is India and India के नॉर्थ में is the mountain and India के साउथ में is the water. So this is a 7th largest country. हालांकि हम 7th largest कह रहे हैं पर is a very small part of the whole land जो आखिरी में जाकर समुद्र में मिल जा रहा है. समुद्र का पानी आपको दिखेगा हिलता जुलता रहता है और हिमालय जो जमा हुआ बर्फ है इट्स अ फ्रोजन ओशन जो कभी भी पिघल सकता है. सो इतना जिसको मालूम है और इन दोनों के बीच में मतलब लिक्विड और सॉलिड लिक्विड मतलब बर्फ के बीच में जो इंसान रह रहे हैं इतना अगर इनको मालूम होगा दे विल बी लिविंग इन विजडम. तो यहाँ पर संत सेंट एंड गॉड्स प्रेजेंस इज ऑलवेज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट. So India is the 7th largest country and it has the mountains, it has the plains, it has the plateau, it has the coastal plain, it has the desert. So समुद्र के पास आने से पहले कितने तरह तरह के जमीन, कितने तरह तरह के धरती पूरे प्लेनेट अर्थ में हमें देखने को मिलेंगे ये 7th largest country ऑलरेडी दिखा देते हैं. हमारे पास पहाड़ भी हैं, हमारे पास डेजर्ट भी हैं, प्लेन लैंड जहाँ पे हरियाली होती है वो भी है, खेती बाड़ी का इलाका. देन वी हैव द कोस्टल प्लेन. आफ्टर दैट बिफोर द वी हैव द प्लेटो. सो वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेन्स, वी हैव डेजर्ट, वी हैव प्लेटो एंड वी हैव कोस्टल प्लेन. सो जब इंसान जब आखिरी का तरह जब आ जाते हैं व्हेन वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ और द लास्ट पार्ट ऑफ द लैंड एवरीथिंग कम्स टुगेदर एज इफ वी आर सीइंग वन पेज आफ्टर अनदर पेज. And while seeing one page after one page, are we really enjoying or we are feeling disturbed or we are feeling scared or we are living in fear? So when you come to the last part, the concluding part, either of the land or of our life, many things comes together. The mountain, the desert, the plain, the coastal plain, the plateau, the water, everything comes stuffed together just to give us the last medicine, the last capsule, जिसे खाकर we can feel we are simply enjoying the life, the beauty of life, or we can feel that we are in darkness. हमसे कहीं गलती हो गया है या हमने गलती का साथ दिया है. So this is the last phase of the southern part of Asia and the last image of God's introduction with a variety of things when we are coming to the end where life doesn't exist. Is not permitted to exist by the solar system. I mean intelligent life not permitted to exist by the solar system. क्योंकि इंटेलिजेंट लाइफ अगर धरती में भी रहेगा, पानी में भी रहेगा, हवा में भी रहेगा, बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर निर्भर किए हुए, then he becomes God. So that permission is not yet given by the super system that is the solar system. Is it clear? So जो पानी में रहते हैं they may be blue whale but they may not be of super intelligence. और जो हवा एस्ट्रोनॉट में जो जाते हैं they will be going in a box, spaceship. एंड उस स्पेसशिप के बाहर अगेन देयर इज हेल्पलेसनेस, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सो सुपर इंटेलिजेंस को अगर धरती में भी रहना है, पानी में भी रहना है, हवा में भी रहना है विदाउट द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देन दे हैव टू बी ऑफ अ वेरी सुपर सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस विद मॉरल एंड अफेक्शन विच नियरली ब्रिंग्स हिम टू द गॉड्स पैराडाइज, जो शायद आगे चलकर होगा या लेट्स एक्सपेक्ट जो आगे चलकर होगा. Fine. Now let's just continue. We'll come back to India, the 7th largest country of the world, the southern part of Asia. And though India is in the southern part of Asia, we come to the north of India, that is the northern mountain. So let us just stick to the mountain. We'll just study the mountain and we'll conclude our chapter only with the mountain. Civilization and people. ये अचानक झटका दे देते हैं, but that is little later. Clear. Now the northern mountain. This northern mountain has 3 ranges. तीन रेंज उनके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंडिंग विद अरुणाचल प्रदेश. इट्स अ बिग रेंज. दे आर इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. एशिया के कंपेयर में जम्मू कश्मीर का डिस्टेंस अरुणाचल से बहुत छोटा है, मगर हमारी नज़र से जो आप पहाड़ किस तरफ रह रहे हैं, हमारी नज़र से जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश इज अ बिग डिस्टेंस. सो किसी के बैकग्राउंड में अगर हम कुछ चीज़ देखेंगे तो हमें छोटा दिखेगा, अपनी आंखों से अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत बड़ा दिखेगा.
अपने दिमाग से अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ शामिल हो जाएगा, डेजर्ट, प्लेन, ये सब. देन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ सीरियस वी आर. जब तक हमारे पास सेहत है, वी आर हेल्दी, जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस है, हाउ सीरियस वी शुड बी विद द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड द माइंड. Now the northern mountain, starting from Jammu and Kashmir and going till Arunachal Pradesh, northeast. Here is the range of the mountain, and they are in 3 ranges: high level, middle level and lower level. अगर हम एशिया की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले हमें हाई लेवल दिखेगा, उसके बाद उसको लांघने के बाद विल कम टू द मिडिल लेवल, देन विल कम टू द लोअर लेवल. और जो इंसान पहाड़ की इस तरफ हैं और समुद्र के बीच में हैं, उन्हें सबसे पहले लोअर लेवल दिखेंगे, फिर हायर लेवल दिखेंगे, मिडिल लेवल दिखेंगे, then they'll see a higher level. Is that clear? So most of the people, they go with solid, they go in the formula of solid, liquid, gas. They don't start with God first. So they start with solid, liquid, gas. बीच में they catch the God. उसी तरह जब हम आखिर में, जिंदगी का आखिर में जब आ जाते हैं तो भगवान उसी तरह पेश आते हैं. He gives everything together in a thunder, and then he wants to see how we react. So more or less the way we work out, the way we deal in our actions, in the same manner we have the super system, the solar system dealing with us at the last part, when we are nearly becoming superhuman or we are failing to become superhuman. So there are 3 layers of Himalaya, 3 layers of the mountains: the higher range, the middle range and the lower range. जो इंडिया में बीच में रह रहे हैं, समुद्र और पहाड़ के बीच में जो रह रहे हैं, they will first see the lower range, then the middle range, then the higher range. और जो एशिया की उस तरफ हैं, they will first see the higher range, the middle range and the lower range. Is that clear? Now let's start with the lower range, because we are going into the mountains, we are going into the world of knowledge through ordinary peoples जो solid, liquid, gas इसको पकड़ के चलते हैं. Is that clear? Because we are not yet experimenting with the superhuman's structure. So when we come to the lower Himalayas, and in the lower range is called the Shivalik range. The lower range is called the Shivalik range, जो प्लेन लैंड के साथ आके मिल जाते हैं. अगर वो प्लेन लैंड के साथ मिल जा रहे हैं तो दोनों में थोड़ा तालमेल बैठेगा. They'll be little like one another, each other. In what respect they'll be like one another? There'll be a lot of trees, there'll be a lot of forest, and there'll be a lot of wild animals. So this is प्लेन जगह में जिस तरीके के प्राणी रहते हैं और प्लेन के साथ जिस तरीके के पहाड़ आकर सट रहे हैं, more or less life is same. So there are wild animals and there is wild forest. और किस तरीके के wild animals होंगे? Like cheetah, the elephant, the panther, जिनके body and speed of the body is huge. Just like the blue whale in the ocean. The body is huge or the speed of the body is huge. May not be the speed of the mind, may not be the speed of a moral character. That may not be very huge. So ये चीज़ क्योंकि हम लोग we are not experimenting with superhuman's character, तो ये चीज़ किताबों में अभी तक आई नहीं है. ये awareness is always given when we are in the company of good people, intelligent people, and nearly who are trying to be enlightened people. So the lower range is called the Shivalik range, जो plains के लैंड के साथ अपना मिला जुला आकर मिल जाते हैं. और वहाँ की लाइफ कैसे होती है? They are very huge in size, and their speed is there in the size of the body. May not be in the size of the mind, may not be in the size of the moral character. So that is different. And that part is yet to come. So this is called the lower range, जिसका नाम है the Shivalik range. The Shivalik range is the lowest part, where we have wild animals and wild forest that is very huge in size, and the speed is always given to the speed of the body. So this is called the lower range, which is called the Shivalik range. The next is called the Himachal range. The Himachal range is the middle range. It is little higher than the Shivalik range, क्योंकि वो शिवालिक से थोड़ा ऊंचा है और प्लेन लैंड के साथ उसका डायरेक्ट तालमेल नहीं बैठ रहा है. So it is little different than wild animals. वहाँ पर speed of the body, the size of the body will not be present. So it is there is a total cleanliness of green and huge size of wild animals in the middle range, जिसका नाम दिया गया है. What is the name given to it? It is called the Himachal range. The Himachal range is the middle range,
which is not touching the plains, जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे बड़े बड़े जानवर रहते हैं. Since it is not directly touching, तो वहाँ पे बड़े size is missing. So there is an emptiness. So we are slowly going to air. We are going to universe. So how solid, जो solid है, सही तरीके से जो solid होते हैं, how solid ultimately goes into something called mystic universe. Ultimately it will melt with religion. It will melt with a beautiful idea. It will melt with a beautiful superhuman. So the middle range is called the middle range is called the middle range is the Himachal range, which is little higher than the Shivalik range. And in this Himachal range, we don't have the huge size of the forest or the huge size or the presence of the huge size of the animals. Is that clear? And it has been changed into tourist, जहाँ पर खाली इंसान आ सकते हैं. So इंसान के नीचे वाले level में huge size of animals and the speed of the bodies is available. But when we cross the size of the body, the speed of the body or the power of the body, we come to a level where we find human beings. The human beings are small in size, but their way of life is very huge and big. So we have tourist spots, tourist places, hill stations. Some of the famous hill stations are, say, Shimla, Darjeeling, Manali, Mussoorie. So these are the hill stations we find in the middle range, where we find human beings coming and the huge size animals are missing. So as we go higher towards the atmosphere, towards the emptiness of universe, we always require beautiful intelligence, beautiful mind, beautiful life, who can really relate the mysterious system with which the universe is functioning. So this is called the middle range. The name of the middle range is, what is the name of the middle range? The name of the middle range is Himachal range. Himachal range is famous for what? Not for the wild animals, but for the beautiful spots with the beautiful hill stations, the beautiful spots where we find human beings coming, not the animals coming, the huge size animals taking over. So above the animal above the animal are the human beings. Now the last range, the highest range, if you see from the side of Asia, is called the Himadri range. Is the most uppermost part of the Himalayas, जहाँ पे टूरिस्ट इंसान भी नहीं जा सकते हैं. ह्यूज साइज एनिमल्स का जाना तो ऑलरेडी खत्म हो गया है. सो इट्स अ ह्यूज रेंज विच इज टोटली एम्प्टी, एंड द नेम्स ऑफ दोज माउंटेन्स इन द ह्यूज रेंज हैज अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. यहाँ पे टूरिज्म, इंसानों का मनोरंजन इज मिसिंग, जानवरों का ह्यूज साइज ऑफ स्पीड इज मिसिंग. सो इट हैज अ रिलीजियस ऑ मतलब मिस्टिसिज्म. इट हैज अ रिलीजियस प्रेजेंस. इसलिए उन पहाड़ों का नाम भी उसी तरीके से दिया गया है. इट नॉट बी लाइक मसूरी, नैनीताल, शिमला. उनका नाम कुछ अजीब किस्म के हैं. दे हैव द नेम्स कॉल्ड कंचनजंगा, अन्नपूर्णा एंड नंदा देवी. सो दीज आर द नेम्स which is not dealing with tourist spot. They are dealing with something sort of a religious significance. और यहाँ से हाई पार्ट ऑफ द जो रेंज, दिस द हाई पार्ट ऑफ द रेंज, यहाँ से पानी आना शुरू हो जाते हैं. बट इस पानी का नाम इज अगेन लाइक अ रिलीजियस नेम, लाइक कॉल्ड गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. सो इफ यू सी द हिस्ट्री, इफ यू सी द बैकग्राउंड ऑफ गंगा, और इफ यू ट्राई टू सी अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम यमुना, एंड what is the importance of the name called Brahmaputra, we will find the significance of religion coming in, not even science, not even wild animals, not even the speed of the wild, huge size creatures living in planet Earth. So how a solid part of land that starts with animals, it ends with religion. So this is a beautiful awareness, not even knowledge. We are above knowledge. It's a beautiful awareness of the people who are living between the Himalayan mountains and the huge size of the sea, जहाँ पे intelligent life अभी तक पहुँचे नहीं है. So when we come to the corner, जब हम किसी भी कॉर्नर में आ जाते हैं, हम किस तरीके के इंसान बनते हैं? Are we religious minded, or we become like wild animals simply trying to escape, but we cannot escape anywhere? So when we come to the corner part of our existence, are we like a superhuman who is accepting the reality of the universe, or we are becoming like a wild animal, a huge size animal who is trying to escape, but he cannot escape anywhere?
So this is a beautiful chapter which is meant for the classes standard 4 and 5, dealing with one part of India, that is the northern mountain, and the knowledge and understanding of this range of the mountain. What is the knowledge and understanding of the range of the mountain? It is dealing with animals, it is dealing with tourist spot जहाँ पे इंसान जाते हैं, एनिमल नहीं जा सकते हैं, and it is dealing with the high part of the mountain जिनके नाम टूरिस्ट जगह के तरह से उनका नाम होगा नहीं, जानवरों की तरह से उनका नाम होगा नहीं. They'll have a religious significance. So, and when they have the religious significance, we have the water coming out from here. This water is different from the huge water that is at the southern part of India. This water has life. That water has life only for the low level creatures like the fish and the blue whale. Though they are huge size, but the intelligence is very low. And this water coming from the high level of the Himalayas, it is meant for the superhuman or nearly godlike human. So the origin is in the name of the god's name, like Ganga, Yamuna and Brahmaputra. They all have the significance of religion and God, and it is expected whoever accepts this sort of water will also rise in the level of superhuman, so that when they are coming to the corner, they don't try to escape, and they don't try to show the speed of escaping, because there is no escape to anywhere. Other than ignorance, we cannot escape anywhere. So with this awareness, one solid part of the mountain is dealing with plants and animals, is dealing with animals, is dealing with people who are meant for tourist spots, and also for the people who have the higher thinking skills, and that is also very serious. With this, we come to the end of this chapter. We'll go to the exercises. The exercises will be like name the 3 ranges of the mountain. What is the name of the lowest range? What type of animals are found in the lowest range? Then what is the name of the second range, and why is it so famous? Tourist spots are name the tourist spots. It is famous for tourist spots. And what sort of people come in this tourist spot? They're people who like to enjoy themselves. And in what type of season they'll be coming? They'll be coming in the summer season. And what is the next part of the exercise will be about the higher range of the Himalayas. What is its attraction, and what knowledge, what does the higher range of the Himalayas convey? It has a religious significance, it has a seriousness, and it is dealing with high level civilization that has nothing to do with animals, that has nothing to do with the tourist spots. So these are the 3 ranges of the Himalayas, dealing with 3 different dimensions of man's knowledge, man's awareness, and nearly dealing with the system, the solar system, if we can be out of the solar system and merge with the super existence of something called God and be with it. With this, we come to the end of the chapter. Thank you so much. Hope you had a beautiful time.